Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hi Suvarna, all ready? Yes, sir. Very good, very good. I had a word with your partner. She was telling me you guys have faced the problem, electricity, power का. आपका सब ठीक है यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे सब ठीक है. सब ठीक है. All right, good then. What about others? What all you guys are doing it? Good, शांति है. आ जाओ सब. चलिए. We'll start this session. Sir, but I couldn't prepare like many slides. अनुजा के घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मुझे ही करना पड़ा. No, it's enough. It's enough to discuss. We'll discuss accordingly. No issue. ये सर मैं ट्राई भी की करने का बट मेरा लैपटॉप ही डिस्चार्ज हो गया. अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. I know what we did, that is the best and all students should get benefit of. ठीक है, तो हम लोग प्लान करेंगे, डिस्कस करेंगे और दिस इज द लास्ट मिनट. इतना डेकोरेटिव ऐसे. सर वो थीम अच्छा ढूंढना था तो यही मिल गया. अच्छा, नॉर्मल पूरा एकदम इंडियन आर्टिजन टेक्सटाइल होम डेकोरेशन कर दिया आपने तो. सर डांस फॉर्म था ना तो इसलिए. अच्छा, दैट इज द रीजन. यस सर, क्लासिकल डांस फॉर्म एंड टेक्सटाइल. सर थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन जो मिला इंक्लूड कर दिया. डिफरेंट मिक्स करके. हाँ. Good. So come with the video, guys. I can see many of you have joined the session. We'll starting it now. So why these questions are important? If we see 2012-13, 2016-17, है ना? सुवर्ण आपने देखा था ये years questions आप लोगों ने 90. तो बहुत सारे states और ये सब से related questions आते हैं. फॉर्म, डांस, पेंटिंग, ये कहाँ से बिलोंग करता है, या टेक्सटाइल उसका वहां का 2000 लास्ट ईयर भी था कुछ ऐसा क्वेश्चन. रिमेम्बर कोई ऐसा याद आ रहा है? हाँ जी, लास्ट ईयर का नहीं. आई डोंट. लास्ट ईयर नहीं था. आई थिंक नहीं था. हाँ. चलिए, तो अभी जो है हम लोग ये सेक्शन शुरू करते हैं. आर यू ऑल हियर? यस सर. यस. आप दोनों की आवाज आ रही है. बाकी जो बच्चे हैं ये शुड आई रिमूव? तुलसी, वैष्णवी, काजल, हर्ष, Yes, Vinika? sir. All of them are done. So we are here for a final
GK session, this will be done and dusted session for you. And then we might have some session tomorrow, and the one portfolio plans. I don't want you to stick with these but there are some suggestions also which we'll discuss today, what we need to follow, before the exam, how it is. Okay, so let's start. First, Subarna will explain, or we have here Anuja and Subarna. They'll explain the entire content, and then we'll move for a next sort of category. Yes, Subarna. So the first question is, which classical dance form originated in Tamil Nadu that is performed exclusively by women with devout themes of Vaishnavism and Shaktism? Anyone knows the answer? Yes, Arla, Vinita, Harsh. Yes, somebody is saying the answer. Please tell. What is the answer? Idea? There is options also. Guys, we have a YouTube viewer also. Can you guys tell me the option? Bharatanatyam. Yeah, the right answer is Bharatanatyam. So Bharatanatyam is a major Hindu form of Indian classical dance that is originated in the modern day region of Tamil Nadu. The Natya Shastra by Bharata Muni and Abhinaya Darpana by Nadikeshwar are considered to be the original sources of Bharatanatyam, an Indian classical dance form. The dance form is also briefly mentioned in Kannada text Manasola, written by Someshwara. It has flourished in the temples and courts of southern India since ancient times. It is one of 8 widely recognized Indian classical dance forms, and it expresses South India regional themes and spiritual ideas, particularly of Shaivism, Vaishnavism, and Shaktism, collectively Hinduism. Yes. It's a kind of a big identity of Indian dance form, we can say it. There are different, but very, very important. And it has a glorious South history. If we say the Chola Vansa, and those era when we have Indian South port or trade business was there, and it is there. If you will see all the South Asian state where especially influence of the Hinduism, nearby the countries, if you will see all the big temples of the world and the other things are. So especially zone of Sri Lanka and the entire those if we count this area, taking it countries like Vietnam, or we will take below this side Maldives, or other till Taiwan and Thailand. So those countries having a lot of Singapore, in fact, having a lot of influence of Hinduism, lot of influence of those great art history, cultures, and all. So that has been built in those era, and it has empowered in many of the kingdom of that particular time. And that's how many things has come up. And once you will read more about it, you will feel great for Indian history, and especially when it was North was very much disturbed in those era, that keep getting some attract in to us from Kazakhstan, which is Uzbekistan, those side to Afghan, and near Sindh, that Pakistan side of India, the previous India, there we are having a lot of attacks. So during that time, so here in South, the historically, culturally, empowerment was there, and that's influence and impact is still there in South. People are literacy wise, education wise, culture wise, art wise, temple history. So those are really very impactful. So in terms of obviously GK and not this exam question, but anyhow, one should read about it, one should know about it. That's really great. Good one, Suvarna. You have picked a good topic. Next. Thank you. So the next question is, which of the traditional textile motifs is related to the French knot openwork and herringbone stitch techniques? Option A, chikankari of Lucknow. Option B, kantha, West Bengal. C, pipli applique work. D, Rajasthani embroidery. Rajasthani embroidery.
No. Chikankari, Lucknow. Yeah, the answer is A, chikankari of Lucknow. So chikankari of Lucknow is a traditional embroidery style of Lucknow, Uttar Pradesh. In this art form, the French knot, open work, and herringbone stitch techniques are used. And it's the first option. Now the second question is, this semi-classical Indian dance originated in Eastern India, which is performed by wearing a mask. It is a blend of martial and tribal art forms and based on folk traditions of India. The first option is Yes, yes. Which one? Sir, Chow dance. Yeah, right. So the answer is Chow dance. Chow dance, also spelled as Chow, is a semi-classical Indian dance with martial and folk traditions. It is found in 3 styles named after the location where they are performed. That is the Purulia Chow of West Bengal, the Seraikela Chow of Jharkhand, and the Mayurbhanj Chow of Odisha. The next question is, which of the traditional textile motif is the basic? It basically means throat, is associated with Lord Shiva. Kantha of West Bengal. Kantha, West Bengal. Yeah, right. So Kantha of West Bengal is a type of embroidery craft. The term Kantha means throat. In this art, needle and thread is used to stitch on sari, kurta, or Punjabi and chudidar, and many other garments. It is also associated with Lord Shiva. Well, so we will come to the next question. Can you go back? Chikankari one we were discussing before this, right? This one. यहाँ पे option में आप जाओ, आ जाओ. Chikankari from Lucknow. So like this, if you will see chikankari, kanta, like Rajasthani embroidery, or what else is famous from Rajasthan? Can you guys tell me? I've seen in YouTube chat also many of you have given the right answer. Can you please tell me what is famous? The blue pottery. Blue pottery. So I have written that also in the PPT. Oh, you have already mentioned. Yeah, so it's there in the but PPT. yeah, let them practice. फिर मीनाकारी भी है, ज्वेलरी भी है. और टेक्सटाइल में क्या फेमस है? Patchwork. Okay. Ghumar dance form. Okay, good. Shisha embroidery. Shisha work. Mm-hmm. Shisha work. Yeah. Okay, can you please tell me anybody which designer follow widely this chikankari embroidery? कोई designer आप जानते हो? जिनके डिजाइन कलेक्शन में चिकनकारी दिखता है बहुत ज्यादा, और they have made some collection in चिकनकारी. सर राहुल मिश्रा. हाँ नहीं, अनुष्का शर्मा क्या बोल रहे? राहुल मिश्रा बोला था. राहुल मिश्रा. अच्छा, ठीक है. Okay, next slide जाइए. When we talk about chikankari, it's remember this kind of embroidery you will normally see in a women's wear top, and obviously there are many clothes, but the white women's wear top in last season, like just the previous season, it was very much in trend, chikankari top, and that's what in stores also, in many retail stores also following it. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, and especially like people who are shopaholic, you can check it in online also, you will find. So this is the type of embroidery it is. This is going to help you a lot to know, क्योंकि आगे भी फैशन, टेक्सटाइल, knitwear ये सब करने वाले बच्चों को तो I mean you need to know. So one of the very important topic, that's what I said, चिकनकारी, लखनऊ, यूपी. अभी तो हर एक जगह यूपी आता, उत्तर प्रदेश, all news everywhere due to elections. So I think it will be easy to remember, or the one of the biggest states. So you all must be, I mean, the biggest state of India, not the one of the biggest state. So you all must be knowing about this place. Next one. So next is 1 second. तो ये क्या था इसमें, which is to perform by wearing, yes. तो अब ये डांस क्या बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा पढ़ो इसे एक बार आप.
This semi-classical Indian dance originated in Eastern India, which is performed by wearing a mask. It is a blend of martial and tribal art forms and based on folk traditions of India. So when we talk about folk tradition, this is the one of the subcategory. You might get one question from here. तो क्या क्या टाइप का फोक कैटेगरी होता है ना? जैसे द कथक, वी हैव नो, दिस इज क्वाइट फेमस है ना. भरतनाट्यम, वेरी नोन. कैन समबडी विल टेल मी भरतनाट्यम रिलेट टू व्हिच स्टेट, व्हिच प्लेस? Tamil Nadu. Tamil Nadu, man. Very good, remembered. And what about Kathak? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Very brilliant. All champions are here. So now we are talking about chow dance. So let's go on next slide. So when we see a chow dance, can you elaborate this one? Why it is from West Bengal? What is the history? Sir, the name, it is mainly named after the locations, that is Purulia Chao of West Bengal, then Serikala Chao of Jharkhand. So from these names itself, they kept the dance form as chow dance. Great. अब अभी क्या है, जो if you will see those area, those are mean like a Pathari area in a Hindi word. We say the area which is coastal area, in the south normally we see a small mountain. So those kind of area. In fact, Karnataka के आसपास भी जो पहाड़ है, those called that kind of the small mountain only. So what happened? Let's come back to there. If you will see in a area of some area of Bengal to Jharkhand. So in fact Bihar also, certain area of the Bihar also, there you will get this kind of name: Chaivasa, Chahu, Cheer, Churi, such kind of names of the places. So now Chahu dance and image, you can easily relate. This is here, it's look like sorry, you want to say something? No, sir. Okay. So what we can say, what you can recognize in image, what kind of image it is, how you will relate and remember, that's what I'm trying to tell you. Tell me. What you can see here, what is happening? Any idea? महिषासुर मर्दिनी. हाँ जी, महिषासुर मर्दिनी. हाँ, आप कहाँ से हो भाई साहब? बहुत ही अच्छा याद दिला आपने. महिषासुर मर्दिनी. क्या नाम है आपका? बिहार. शिवानंद. शिवानंद. देखिए, अब शिवानंद जैसे बिहार से, तो वो रिलेट कर पाएंगे. इफ यू गो बैक 100 year back, in fact 100 year plus back, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब एक ही स्टेट हुआ करता था. मैं सही बोल रहा हूँ शिवानंद या गलत बता रहा हूँ? है ना? सही है. हाँ या ना? यस सर. है ना? इनफैक्ट बांग्लादेश भी बंगाली हुआ करता था. तो इंडिया का बिगेस्ट स्टेट सोचो वही होगा ना. एंड दैट्स हाउ बंगाल वाज द capital center of Britishers also. That was the capital of India at the moment. So the culturally also Bengal was very, very rich, So Durga Puja, you will see all across the India, they celebrate October wala Durga Puja. But this is what is happening here. Durga Mata, in this particular image you can see, and you can see a Mahishasur. They are fight in colloquial, local style से जो होते हैं, जो artisan या आप ऐसे बोलो उनको, moreover, we say Adivasi. What you call Adivasi के लिए, I'm forgetting the word. Could you guys? Tribal. No, so tribal society of India, the way they play those, that is what we can see it here. Authentic view, images are that has been here placed in our this it's look like more like some stage show or stage this thing. So that has been played over here. So this is what the presentation of Chahu dance. So keep in mind, guys, if you take any image from Google or you are taking an image, so image represent something. So make sure you know the region and why, so then you can relate better. Now you will remember, okay, why Chahu dance from that particular place. Anyway, we know, okay, Durga Puja famous, then Bengal comes. The moment I will tell you, festival like Pongal, कौन सा स्टेट है? Pongal is from
Sir, Tamil Nadu. Tamil Nadu, sir. है ना? So South people तो easily can tell answer, like you know, Tani Pogal is from Tamil Nadu. North वाले थोड़ा confuse होंगे. तो South में अब कहाँ पे, right? ऐसे. Oh, okay. Let's move to the next question. है ना? Which of the traditional, sir, this was also done. Sorry? I done this question. I remember you have done this question. Which of the traditional textile motif is basically means throat is associated with Lord Shiva? Kantha or West. Sorry? Kantha, right? So Kantha is a type of embroidery that you guys know, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes. और embroidery किस type की embroidery होती Yes, है? sir. ये? Stitch embroidery. Stitch हाँ and जी? Stitch नहीं, उसे बोलते हैं hand embroidery, है ना? Yes, sir. Which you are doing it completely by hand artisan, बोलते हैं Yes, ना? sir. So Yes, Kantha is very famous, very known. Dear all, you all will get the PDF. Don't worry. Even on YouTube also there are many students asking about the PDF. Yes, you will get the PDF. Next slide. Dash is a unique style dance art form that developed in Karnataka and is classified into various types such as Badagutittu and Tenukutittu. reaction. Okay, good. I mean, we are trying the name. It's like, you know, people can take time to read. Give 30-second time. Let them guess here and as well as in YouTube. From here, you are going on next question, right? I'm right? So this is only the question. This from here only you will take the question now, right? Yeah. So let's take 5 questions and then we'll discuss about it. Some Okay, conclusion sort of. Okay. But give them 30-second time at least, 1 minute time to discuss. Let them decide तब answer पे जाएंगे. तो उससे क्या होता है? You wait for the answer. अच्छा right answer क्या है? So that somewhere get stuck in your mind. अच्छा याद रहेगा, है ना? So read it, but in terms of to create that movement, उसको वैसे पढ़ने से याद रहेगा. No one make the notes, okay? You all are requested not to make the notes. I hope anybody is making a note right now. No, sir. अर्नब कहाँ तुम्हारा वीडियो क्यों बंद है? नेहा, 1-2 of you have messaged me also. Naomi, we will connect today. I have all your work. Yes, Okay? sir. Yes. All right, चलो बाबू, आज क्लास के बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं. Okay. Okay, good. Tulsi, Okay, guys. what about you? Switch on your video, participate. All right, Subarna, you continue. So any guesses what is the answer? Yakshagana. Reaction. Yeah, right. So Yakshagana is a traditional theatre developed in Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada, Shimoga and western parts of Chikmagaluru districts in the state of Karnataka and is Kasaragod district in Kerala that combines dance, music, dialogue, costume, makeup and stage techniques with a unique style and form. It is believed to have evolved from pre-classical music and theatre during the period of the Bhakti movement. Okay, so the next question is, which of the following traditional textile motif is named after the village? Any guesses? Rajasthani embroidery. No. So the answer is Ceed, Pipli applique work. The ornamental needlework of the Pipli village is popularly known Pipli applique work. This art involves embroidering and stitching of small pieces of colored cloth with flower village scenes, animals, and traditional design onto a larger base cloth. Yeah, that was. Next question is, which is the ancient classical dance form meant for spiritual expression from West Bengal that is performed with drama, history, poetry, and music? Any clue? Bhagavad Mila. Pakka? Nahi. The answer is Gaudiya Nritya. So Gaudiya Nritya or Gaudiya Nritya is a Bengali dance tradition. It originates from Gauda, also known as Gaur in Bengal. It has been reconstructed by Mahua Mukherjee
It is recognized as an Indian classical dance by Ministry of Culture, not recognized by Sangeet Natak Academy, Academy maybe. But study of it is eligible for scholarships from the Ministry of Culture of India. Scholarly reception of the reconstruction ranges from caution to skepticism. The next question is, which of the following is a very popular art form of Himachal Pradesh? Chamba Rumal. Chamba Rumal. Right. Chamba Rumal is very popular art form of Himachal Pradesh. This art form consists of combinations, floral design, drums, and other musical instrument, and scene of Lord Krishna's Ras Leela. The next question is, Dash is a classical dance that originated from Assam in remembrance of Ras Leela themes and Lord Krishna and Radha. First is Satriya. A. Satriya. Yeah, right. The answer is Satriya, or Satriya Nritya is a major Indian classical dance. It is a dance drama performance art with origins in the Krishna-centered Vaishnavism monasteries of Assam and attributed to the 15th century Bhakti movement scholar and saint Mahapurush Srimata Shankaradev. Then the next question is, which of the following art form is believed to be auspicious, a symbol of happiness, prosperity, and suhaga for married women? Fulkari? Any more answers? Fulkari of Okay, it's Fulkari of Punjab is one of the famous embroidery tradition of Punjab. It is believed to be auspicious, a symbol of happiness, prosperity, and suhaga for married women. This everyone will know. Bhangra is the dance. Punjab. Yeah. So Punjab. Bhangra is a type of traditional folk dance of the Indian subcontinent, originating in the Majha area of Punjab. It is done in the season of harvesting, according to Manual 2021. Bhangra is specially associated with the vernal Vaisakhi festival. Okay. Sir. हाँ बताइए. Sir, questions हो गए. I have to do this now. Indian Art and Handicraft. अच्छा, let's go back. We'll discuss the question, then we'll come. अभी ये क्या हमारे पास Indian नीचे? So that was Indian Art and Handicraft. Okay. We'll come to Indian Art and Handicraft. वहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा हाईलाइट करते हैं सब पे. हाँ जी, तो अर्नब क्या इसका राइट आंसर ये बताओ आप लोग. यक्षगान. कहाँ से रिलेट करता है? कर्नाटका सर. ओके, कर्नाटका के कौन से राजा काफी फेमस थे? क्या नाम था उनका? किंग ऑफ कर्नाटका. सर नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट आई नो इट. Tipu Sultan. Yes, one of the famous king, but the Karnataka. Okay, do you know about this? Because might be these things. Sometimes they ask some art history questions. So, do you know the Sir, railway station? ये सिटी जिसने बनाया था किसके नाम पे है ये रेलवे स्टेशन? पता है यहाँ का नाम क्या है? बैंगलोर संख्या. Yashwantpur. Oh, Yashwantpur. Getting confused. There are multiple railway station. Airport. Kempegowda. So if you will see the here and there in cities, so different places, you will see his statue also, and as well as is like he has established
all this, like, kingdom, city and all. But most interesting thing is, if you will see previous cities, if you reach here, all the cities of India or any country, in fact, when we take initial civilization, we belong from which civilization? Indus Valley. Indus Valley. Indus Valley civilization. And where was the Indus Valley civilization? Which area? Pakistan. Pakistan. I mean, abhi ka dekhenge, though we don't have pretty much clear idea because we are not able to read the documentation and that time ka aisa hi hai. But if you will notice, so it is that Pakistan wala area, thoda Afghan ka bhi aap le lo, and you can take in fact the area which goes until the this area जो गुजरात वगैरह का है उसको ही बोलते हैं जो वहां तक वो डेवलप था इतना बड़ा हो गया. I mean, you have also read, so what you read you can tell me, but if you will see, it has divided into how many parts? सिंधु वैली को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? हाँ जी, इनिशियल वाला जो फेज था एंड देन कितने में डिवाइड किया गया है? हाँ जी, 7 थे क्या? 7. Sorry? 7. Okay, I mean, it will become so depth for you guys, let it be. So what I'm trying to tell is, initial कर्नाटक का जो था, यहाँ का जो kingdom था, which is अभी भी famous है. You all have heard about Mysore, right? Yes, sir. Yes, sir. You know about Mysore? So Mysore का जो fort है, किला है, that is in which number? कहाँ पे आता है? कितने नंबर पे इंडिया में? So third or fourth? No, I want to know the real one, right one. First, second, third, जल्दी बताओ. Sir, it's third or fourth, I guess. इन दोनों में से ही है क्या? So this is also the one of the important questions, okay? And I want one of you to check right now. All right? It is not third or fourth. That I'm sure. You need to check and tell me the right answer. Now let's go on next question. पढ़ो इसको आप, क्या था ये? Which of the following traditional textile motif is named after the village? Option A, chikankari, B, kantha, C, pipli applique work, D, Rajasthani embroidery. Guesses? You all know the answer. Tell me the right answer now. Student? Pipli applique. Adi? Applique. Applique क्या होता है? Any idea what is applique? Why it is called applique? Image भी दिखाओ आप. Why it is called applique? What is applique? What is patchwork? लिखा भी हुआ है. You just need to explain what is applique. Needlework. You use cloth. Okay. Needlework. Embroider different pieces of cloth. It's a needlework. Okay, पढ़िए क्या लिखा है आप लोगों ने? The ornamental needlework of the Pipli village is popularly known Pipli applique work. This art involves embroidering and stitching of small pieces of colored cloth with flower, village scenes, animals, and traditional design onto a larger base cloth. और पैचवर्क क्या होता है? What is applique? What is patchwork? Sir, no idea. हाँ जी? Idea नहीं है. नहीं आइडिया आप लोगों को? तो पैचवर्क जहाँ तक मुझे याद है, रिसाइकल्ड जो पीसेस ऑफ क्लॉथ होते हैं उनको चिपकाते हैं या स्टिच करते हैं. So patchwork or applique, this is the two of the these things. Traditional textile, we can say Indian traditional textile, hand-done textile, which you will learn. जैसे हम लोग करते हैं ना EOD POD subject design में, right? Forms and shapes, एक दूसरे से relate करता है ना, forms and shape. तो वैसे ही होता है आपका पैच एंड एप्लिक. पैच में क्या होता है? पीसेस, आप जो है कपड़ों के पीसेस को लगाते हो बराबर, है ना. यहाँ पे क्या होता है? क्विल्ट. थोड़ा एप्लिक करने के लिए क्या करते हैं? यू शुड हैव अ बेस बिग फैब्रिक एंड देन शॉर्ट स्मॉल फैब्रिक विद द एम्ब्रॉयडरी. सो यू आर एनहांसिंग दोज फैब्रिक डिटेलिंग विद द एम्ब्रॉयडरी. गेटिंग इट? दैट इज कॉल्ड द एप्लिक, है ना.
Understood. All right, this is need to be clear. This doubt need to be clear. ये questions आए नहीं आए, this will be there in your course always, है ना? आ भी सकता है, but I hope if somebody is watching on YouTube also, make sure you are clear about the concept, what is applicable. Okay. So it is very important to have the very clear, concept about the topic, because as that is going to be your asset, whichever college, wherever you are going. All right. So I always want, we have to be very clear about the theory. Jitna knowledge hai aapke paas, how you will implement, that is more important of that knowledge. You might get more. But agar knowledge ही gain करते रहोगे आप book की तरह खुद को computer बना लोगे, वो काम नहीं करेगा. So look at your implementation of the things. Next slide, please. Very good. What is your... the ancient classical dance form meant for spiritual expression from West Bengal that is performed with drama, history, poetry and music. हाँ जी. So dance form वगैरह हम कौन सा आंसर क्या है इसका? गौड़िया नृत्य. Okay, nice. So dance form वगैरह जहाँ तक है हमने पहले भी बात करी है. We have to keep this one in a mind. So that might come in the exam, and this can be one of the important topic, and we just need to go through it. Whichever note you have created, there is many note has been shared in the group also. It's not important. All the notes supposed to come in a in a PPT form. So make sure you go through it. Next. Which of the following is very popular art form of Himachal Pradesh? Chamba Rumal, Bani and Veer Bharat, Kutch and Kathiawar embroidery, Bagh, Kashidakari. Answer is Chamba Rumal कहाँ से है? अरे आपने आंसर ही दिखा दिया. हम ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन. हाँ वही. So चंबा रुमाल जो है, it's again, you are seeing the right word GI. What is GI? क्या होता है? Geographical indication. You are right. Can you, anybody would like to elaborate about geographical indication? GI के बारे में? Geographical indication है वो चीज वहीं बनती है और कहीं नहीं आपको मिलेगी. Like that is specifically a speciality of that region. That particular place. Correct. जैसे कि अभी मैं आपको कर्नाटका में टॉय बोलूं, कौन सा जगह याद आएगा? Anybody knows? हाँ जी. So Chanapatna, wooden toys. Wooden toys तो है, place नहीं पता मुझे. Correct. टॉय जब बोलेंगे तो वुडन टाई चनापटना, दैट इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना? बैंगलोर में भी वैसा टॉय बना सकते हैं आर्टिजन को बुला के, बट व्हाई चनापटना इज फेमस, राइट? जैसे हम बात कर रहे थे टी के बारे में, है ना? सो टी होता है, असम में भी होता है, दार्जिलिंग टी नाम से फेमस है ना? Chamba Rumal. So geographical indication is one of the, GI is one of the very, very important things which we need to understand. And the country like India, which is so diverse, so well diverse, मतलब हर एक टाइप की कंट्री है इंडिया में. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. अभी रिसेंटली ये न्यूज बहुत ज्यादा ये हो रहा है, एंड मुझे लग रहा है जो आप सिर्फ इंडिया घूम जाओ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, यू विल फाइंड एवरीथिंग. तमिलनाडु में आपको फ्रेंच कॉलोनी भी मिल जाएगा, है ना? पुर्तगाली, ब्रिटिश, हर एक टाइप का कल्चर और ये मिल जाएगा. आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट द गोवा, गेट टू नो देयर आर 25-30% population in Goa is Christian. Imagine, like, I mean, those are voters. ऐसे जो बाहर से आके लोग रहते हैं वो नहीं, on vote rights जिनके पास है. So it is very important to know our country specialization. It is fun knowing it. Okay, next. Dash is a classical dance that originated from Assam in remembrance of Ras Leela themes on Lord Krishna and Radha. Kshatriya. Satari. Yes. Agree, all of you? Dance we have discussed. I mean, already we have discussed. So this part is done. सर अभी हाल इसका जम्मू कश्मीर की झांकी में भी इसका, सॉरी आसाम की झांकी में भी इसका निकला था, like the 2022 Republic Day में it was represented. Oh, nice. Yes. So मैं change करूँ? Yes, we'll go, and I would like to address before that all the YouTube viewers.
you all can get these PDF, and it's good you all are enjoying participating in this session. Thank you so much, Sanya, Bhumi, Madhuri. वीडियो क्लियर नहीं है, somewhat some region से हो सकता text font वैसा होगा. We suggest you to content word के लिए, and you can go through it. I think because of font only, maybe you are not able to see clearly. Font की वजह से YouTube पे थोड़ा quality होने के बाद ये हो रहा होगा. So you can claim and get these PDF. Important direction for your exam. You are not like we are on the topics tracks which we are discussing, so it will be helpful for your preparation, and good you all are watching it. Make sure you like, subscribe, press the bell icon button for the channel. Next question, please. So should I go to handicrafts directly or? ये सब हमने डिस्कस कर लिया ना. भांगरा ये सब आपको हाँ, पता होगा. हाँ, ये मतलब this all is quite famous things which you all know. Bhangra from Punjab. So the word Bhangra itself define it. It's from, और वो कुर्ता वाला क्वेश्चन दिखाइएगा. That is also important. Many students might not know. Fulkari. When it comes to Fulkari, here that's come from Punjab. और look कैसा दिखता है वो आप देख लो, है ना. So this embroidery is done in Punjab. So when it comes to Punjab, in fact Rajasthan, it's very colorful, very very colorful. So आप नाम्स और टॉपिक्स ऐसा ये देख करके टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी ये सब पार्ट का जो है, so the states are having, so you can answer it accordingly and just go through it once with the notes what has been given here, and you can have your own notes also, that also you can follow for GK. Next one. हो गया, ये हमने कर लिया. वो सेक्शन जाना है. 1 second. Yeah. So we are here in Indian art and handicraft from different state. So very carefully you can repeat 2 times clearly. Here you guys can listen and you can get the answer. Starting from Andhra Pradesh. जैसे अगर आंध्र प्रदेश से शुरू करेंगे, so Andhra, AP. So we'll make the clearly about the state names and all. Because art form is something which is important, and chances are there where you might have one question, and GK 1 questions or 2 questions are also very very important if you're able to give a right answer. So read and remember, you have now your time of exam time is in hour, right Arnav? कुछ के घंटे बचे आप, है ना? Yes, sir. Right? आवाज नहीं आ रही आप लोग की मुझे. हाँ, चलो. Yes, sir. Good. So let's read सर these. आप तो ऐसे बोल के स्ट्रेस लगा रहे हैं. अरे ऐसा मैं बोल के आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ. आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, ऐसे सोचो. मैं स्ट्रेस लगाने के लिए घंटे नहीं बच्चे वो सुन के डर लगता है. नहीं, ऐसा सुन के डरना नहीं है. तब तो एग्जाम से पहले बहुत डर जाओगे आप. एग्जाम. We are here to celebrate. Good, you shared if you feel so, है ना? ऐसा नहीं होगा. Okay, let's start this discussion. Okay, so the first one is Andhra Pradesh. And 1 second, Suvarna, I want you guys to participate. It's not Suvarna, Arnab, then the Naomi, Anuja, all of you participate. Divide 1 or 2, you read, explain, another one of you answers. So this way you remember the things. This way it is a group study. All right, or GK. Okay, go ahead. So the first one is Andhra Pradesh, which is famous for Kondapalli toys and Kalamkari art. Anyone knows more information about Kondapalli art? Kalamkari? Kalamkari to ab mostly it's used in textile as a print. Yeah. And it depicts Tamil Nadu, I guess. No, sorry? Telangana, Kalamkari. Telangana. You're right. It has origin. Kondapalli, it's toys. Toys with wooden. It's wooden toys. And their noticeable feature is like their small proportions, like the small bodily proportions. It's very, you can recognize them easily by their, goal as the, very rounded figures of Kondapalli. It's like very noticeable. So the second one is Arunachal Pradesh, which is famous for Thanka painting and weaving craft.
Third one, Assam, bamboo and cane handicrafts, and also water Hyasat handicraft. Fourth one is Himachal Pradesh, which is famous for wood carving and chambar mal, as we read. Then fifth one is Jharkhand, which is famous for Jadu, Patua painting and Soharai painting. Sixth is Karnataka, which is famous for sandalwood craft and Mysore painting. Seventh one is Kerala, which is famous for Kathakali mask and coir products. Eighth one is Bihar, which is famous for Madhubani painting and Sikki grass craft. Ninth one is Chhattisgarh, which is famous for bell metal craft or dhokra craft and terracotta craft. 10th is Goa, which is famous for seashell craft and azulejos or hand painted tiles. Then we have Gujarat, which is famous for bead craft and kavda pottery. 12th one is, Oh yeah, गुजरात में अजरक भी आता है, I think अजरक printing. Sir. Ajrak painting. I am not sure. Yes, tell me. Sir, I had just this one confusion. In Gujarat, ये अजरक fabrics जो होते हैं, ये famous उन्हीं या इसी state के हैं या like are they from some other state? नहीं है वहीं से, बट हम उसको आप कहना क्या चाहते हो, मतलब उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्या है मतलब? वो किधर से है sir? Because I was confused. It's either Gujarat or some other state. I'm not sure on that. हाँ. One by one उसको ना डिस्कस करिए और एक्सप्लेन करिए. Is that like let me ask Vinita Chaudhary, what is from Goa? क्या याद है आपको? विनीता, अभी वो चैप्टर चला गया ना, गोवा से क्या याद है विनीता? Anyone who is remember? Vinita is sending a text message. Who will tell me? Nathan? Dinesh? Okay. Neha, Pooja, Riya, Sabali, you have asked me class link to join this session. This is only students who is want to have a contribution in this class. You need to tell me answer. Tell me what you have learned. Guys, last slide, what you guys have remembered, just try to recall. Then we'll go for next slide. Let's discuss here. Chat में नहीं लिखना है. हाँ, आपको तो याद होगा ही. Obviously आपने भी पढ़ाया, आपको याद होगा. Rest? Anyone else? अर्णव, आपको क्या क्या याद है, एक बार रिपीट करो आप. Then we'll go for name the student. Ask Archie, ask Dinesh, Kajal, one by one. पहले आप बताओ अर्णव, what all you remember yourself. Let's see how much recall you have until 10, 1 to 10, what you guys have just read. Sir, गोवा से फेशियल कार्विंग याद है मुझे. हाँ. मैंने कहा जो भी याद है, जो स्टेट का याद है, कोई बात नहीं. 1 to 10 है ना टोटल उसमें. Yes sir. क्या क्या था बताइए, किसी स्टेट का बताइए आउट ऑफ 10. कलमकारी आंध्र प्रदेश है ना. Kalamkari is like the famous print and also art form from that region. और ओके, और बताइए. मुझे एक बार फिर से दिखाइए. और बिहार का फिर से मधुबनी जाना आप लोगों को. पेंटिंग It's okay. Go back and go back. After every page, I'll ask the question. I want you guys to remember. Let's go back and see. Goa is famous. Okay, let's go quickly. Sir, I went, sir. Okay, read quickly. Read quickly. Andhra Pradesh is famous for Kondapalli toys. जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप आंध्रा पढ़ रहे हो ना, केरला पढ़ रहे हो ना, बिहार पढ़ रहे हो ना. जैसे देखो मैं बताता हूँ, बिहार भी याद नहीं आप लोगों को. बताओ छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, यहाँ तो देखे हो अभी जो है. अभी जैसे हम लोग पढ़ ले कर्नाटका, सैंडलवुड क्राफ्ट एंड मैसूर पेंटिंग. मैसूर पेंटिंग कितना फेमस है?
कर्नाटका था यहाँ पे। तो ऐसे जब पढ़ोगे ना आप, कर्नाटका रिलेटेड विथ मैसूर पेंटिंग एंड देन सैंडलवुड क्राफ्ट। सैंडलवुड भी काफी फेमस है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, है ना। सो सेम वे जब हम बिहार देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग कितने बार कैट गैट सबके क्वेश्चन में आ चुका है। मधुबनी पेंटिंग रिप्रेजेंट विच स्टेट, वो हाउ मधुबनी पेंटिंग लुक, हाउ यू विल ड्रॉ डिजाइन एज पर मधुबनी पेंटिंग, राइट। आप अगर सिक्की ग्रास क्राफ्ट भूल जा रहे हैं ठीक है, बट मधुबनी पेंटिंग तो याद रहना चाहिए। All know Madhubani painting is from which state? Raise your hand. I just want to see how many of you are active. Raise your hand. Mukesh sir, make me co-host. A student who will not raise the hand, I'll remove them. Like, you know, might be you are not active. If you are active, then only you are allowed to stay here. Yes, sir. Very good. So Varna is saying, I don't need to raise the hand. मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं। Sharon, what about you? One student, I am going to remove them. Sharon, what we are discussing, you don't know, I'm removing you. Thank you. Okay, let me ask them for video. All right, Subarna, you can mute yourself. Yes, sir. Okay, Arnav, you explain this. सर क्या मतलब पूरा मुझे पढ़ना है? ये पढ़ना नहीं है, समझना है और समझाना है लोगों को। पढ़ना इज डिफरेंट। पढ़ के याद नहीं रखते हो। अभी तुरंत पढ़ा आप लोगों ने, याद ही नहीं है। नहीं, लाइक सर मतलब मुझे सिर्फ हर स्टेट के क्राफ्ट के बारे में बताना है। हाँ। ओके, सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश यू हैव कोंडापल्ली टॉयज। मेरी आवाज आ रही है राइट? You have Kondapalli and Kalamkari art. Kalamkari art is very famous because वो अब fabrics में use होता है, and you can see depiction of folklore, Indian folklore like Ramayana, Krishna and Leela. All this folklore is present in the sarees also from Andhra Pradesh. Then Arunachal Pradesh ka you have Tanga paintings and weaving craft. So I don't know about weaving craft, like in Tanga painting is like it's also famous in Ladakh, and they have similarities. Like this painting is traditional painting which you find in the monasteries, and the best way to recognize is by the eye. It's like their eye is the noticeable feature. Then and again gradation. They are known for their gradation in color. That's one way you can recognize. And then Assam में bamboo and cane handicrafts is there. Bamboo baskets and cane mats are made. That is one thing I know about Assam. And Assam में if traditional dance form Satriya, it's already like we discussed. And then Himachal Pradesh में wood carving है, Chamba Rumal. Chamba Rumal is a GI, and wood carving is also very famous. Especially Himachal Pradesh ki jewelry boxes, they are famous for the wood carving. And then Jharkhand se you have Jadoo, Patua paintings and Sorai paintings. So इसके बारे में मुझे उतना knowledge नहीं है, so I can't tell much about them. Karnataka se sandalwood craft. Sandalwood craft is obviously done on sandalwood. They are known for their scent, and it's easy to carve on them because they are softwood. And yes, this is also like one of the famous handicrafts from Karnataka. Mysore painting. Noticeable feature of Mysore painting is gold foil. एंड ये आपको तमिलनाडु से कंफ्यूज करेगा बिकॉज तमिलनाडु में भी गोल्ड फॉइल का यूज होता है, बट दैट इज तंजावुर पेंटिंग एंड दिस इज मैसूर पेंटिंग. दे आर टू डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स. Kerala में you have Kathakali mask making, that is like you can relate it to the Kathakali dance form, and then coir products. बिहार में मधुबनी पेंटिंग जिसे हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं. Again, their recognizable feature is the bright use of colors, floral patterns, and the eyes, and it has deep roots in Indian culture क्योंकि इनका relation, people say it's during the time of Sita's father, and like that's how it is very famous. And unke you can see the depiction of Ramayana in their paint, in their handicrafts. Then you have Sikki glass craft. इसके बारे में मुझे नहीं पता, you guys can check. Then you have
घर से bell metal craft and dokra craft. Dokra craft is actually a type of metal casting craft where you have figurines that are made from the metal. Terracotta is a type of a clay, like a clay को hard करके ये terracotta के products बनते हैं. You have ghatam, which is a musical instrument, is also made from terracotta. And bell metal, obviously it's sonorous. It's used for in the construction of bell and figures. Goa में seashell craft is used for making accessories, bangles, home decors and showpieces, and hand painted tiles. इसके बारे में guys can say. So I think I'm done, sir. No, explain. तो मुझे भी नहीं पता था. नहीं मुझे भी नहीं. नहीं you have explained so well. नहीं मतलब कुछ पता है और कुछ नहीं पता. No, very good. Let's start for Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh. Now we'll start with Gujarat. Who would like to explain? Suvarna? Yes, sir. You only need to come. Nobody is raising the hand. Like, okay. Okay, so the 11th one is Gujarat, which is bead craft and khavda pottery. Khavda pottery is mainly that pottery which you usually see. And then the 12th one, and 11th one, I'm not sure about bead craft actually. And 12th one is Haryana, which is Sarkana craft and Bagh art. 13th one is Madhya Pradesh, leather craft and Chanderi craft. 14th one is Maharashtra, which is Worli painting and Kolhapuri chappals. These two are the most famous things in Maharashtra. Like Worli paintings, it is almost like what you see, human stick figures, kind of like that, which have just like a different shape, triangle shaped body figure. And Kolhapuri chappal is also famous in Maharashtra. And then 15th we have Manipur, which is famous for corn grass craft and stone carving. 16th is Meghalaya, bamboo and cane craft and weaving. 17th Mizoram, which is the same as Meghalaya, and even Nagaland, it's the same. 19th one is Odisha, silver figurine of Kathak and Pattachitra. Pattachitra is another famous painting, I guess. Sir, Pattachitra is a famous painting, right? Yeah. Yes. Pattachitra is so detailed, when we talk about Pattachitra. What is there in Pattachitra painting, by the way? Somebody will tell me? Sir, Pattha means, cloth. So Pattachitra, matlab, these are, basically paintings that are done on huge pieces of cloth. And basically, again, they are known for their single strokes. Like, उनको बार-बार rework नहीं किया जाता, like layering नहीं होती अक्सर उनके work में. And again, they depict more king, those times king life, folklore, Indian, cultural stories and epics उनसे inspired होते हैं. And one more striking feature of Pattachitra is that it follows a line, like in a straight line. Yeah, it follows a structure. Like एक ही line में story narrate की जाती है. हाँ. And they keep borders also. They have all across the borders bit, and they do lot of hand painting. Lot of detailed hand painting over there. Dinesh, you want to say something? Shaba, and also it belongs to 12th century, sir. Yeah, Dinesh? It belongs to 12th century paint. Oh, belong to 12th century. Very good. Your choice is specific. So those borders and other things, and moreover, if you will see, this is very intricate hand-done paintings. All right. And many artists in village, they have won President Award for this one. Such detail they do it. अब जाओगे मिलेगा कोई आदमी पता चलेगा अच्छा इनको President Award मिला हुआ for this particular work. So this is how you find it. It is very, very famous when it comes to the painting part. Okay, next. Next one is Telangana, which is famous for Bidri craft and Banjara needle craft. So Banjara needle craft, it is unique in Telangana, and it involves use of simple needles and embroidery thread and original fabrics, mainly cotton and woolen. And they combine together, and it's a great form of art.
And then we have Tripura, which is also famous for cane and bamboo handicraft and handlooms. Uttarakhand, which is famous for wood carving and woolen handicrafts. West Bengal is famous for Madur craft and Chola craft. Uttar Pradesh, as we know, chicken curry and Banarsi sari. These both are really famous. Jammu Kashmir, we have handloom wala and Kashida embroidery. Punjab, as we saw, Fulkari and Paranda. Then Rajasthan, we have blue pottery and Ustaha art. Ustaha art, I don't remember much, but जैसे ब्लू पोट्री बोले तो वो सबको याद होगा, उस्ता आर्ट है तो नहीं है। इसीलिए आप जब कोई भी टर्म्स या वर्ड पढ़ो तो मेक श्योर करो दिस इज सजेस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू to learn those words in a visual term. Make sure you find out the similar visual to know it. जितना भी आप जानते हो उतना at least you will know about that topic, right? Next one. Next is Sikkim, which is Chakotski table and carpet weaving. 29th is Tamil Nadu, Toda embroidery and Tanjore painting. You all will get the link. Let's go back here. We will give some time over here. You all will get the link. I mean, or PDF. I'm getting a message call in between a session. जो सर ये clear नहीं दिख रहा है YouTube पे. So can we get the material? Can we get the content? Because here it is not seen properly. I suggest all of you. जो आपको अगर नहीं दिख रहा है, that is fine. But you make sure that you can hear the discussion of the session. And we'll available you this PDF in application. You can contact the team also. You can fill the form which has been given here, and don't forget to subscribe so you will get a more content in coming days. And we have 19 students. If I'm keeping tomorrow portfolio class, could you please suggest me what time would be suitable, what time we should keep? Just to change your mind also, what time we should keep portfolio class tomorrow? Mainly PI and portfolio and all, because many of you are writing a Pearl there, you are having a UID exams is coming next. So obviously always person is okay parallelly what next, what to do. That is what. So can you please tell me when to keep? Any idea? In the evening, I think it would be better. Evening better. जो ऐसे निफ्ट की तरह दिमाग नहीं लगाना है, right? Yes, sir. Naomi, you want to suggest anything? Yes, sir. Evening would be fine. We should keep or not tomorrow? Suggest me. A student call. Yes, sir, you can keep. We should keep. I mean, exam time से पहले ऐसे रही. Sunday तो post exam we'll keep for exam discussion and some of the PI tips or maybe the GD. But that also we'll see post exam only. Obviously, the whole day you are having exam, but you guys will be tired so much. So I'm planning to keep on Saturday and then next on Monday evening. Okay. And the master portfolio class is on Wednesday evening. That is what. Arnav, what do you think? आपके भी exams हैं? We should keep or not? Sir, I am fine with evening also. Morning में भी in fact मैं ठीक हूँ. दोनों सा time मेरे लिए ठीक. नहीं morning नहीं रखनी. Morning आप लोग ठीक है sir. I'm fine with evening also. Proper, like let's make sure you wake up. Don't change the cycle. Wake up early, but you relax. I suggest you guys try to have some experience outside experience, physical experience. You all are preparing from so long without taking any stress. Do not see. It was suggested earlier to watch some series, कुछ ऐसे देखो ये देखो, because nowadays phone is become your second friend. मैं कई बार ये एड्रेस एक आध बारी पहले भी कर चुका हूँ, और system is become your friend. So don't entertain yourself on movies or series or something tomorrow. This has been advised because आंखों को भी आराम चाहिए. You watch some tree, pear and all, like naturally that will give you more relaxed mindset. Being in Bangalore, I have to just walked next to army camp because it's very peaceful, very pleasant, even in midnight or maybe in the morning or evening, whichever time I get. So sometimes, your me time also is very, very important. You might be thinking, अच्छा नहीं आप खुद को खुश कर रहे हो, but आप और stress और data consume कर रहे हो, और खुद को stress कर रहे हो वहां पे जाके, है ना, और ज्यादा ये होगा. तो avoid such thing tomorrow. And obviously we'll come on these notes for discussion. Before taking this parent company of Indian brands, it's very, very important topic. Let's go back on last topic. I have some point over here.
and then we'll discuss. We have discussed till the Goa. Next slide, please. Your friend have discussed about these part. जैसे हम ओडिशा का डिस्कस कर रहे थे. नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, कहाँ का स्टेट है ये? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, कहाँ पे है ये? असम. असम. These are, sorry, Northeastern states. Northeastern. असम क्या है? Northeast state form. Northeastern states. So Assam is the one of the, like, you know, we can say after थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग, गुवाहाटी जैसे शुरू होता है. गुवाहाटी is the one of the place इंडिया का जहां से कि आप देखो तो ओके, बंगाल, बांग्लादेश, इधर का जो बाकी 7 स्टेट और ये है उसको वो जोड़ता है. वन ऑफ द प्लेस इन देयर. जैसे भी अभी मूवमेंट भी हुआ था ना वहां पे, कुछ जो गवर्नमेंट ने जो रूल लाए थे, कौन कौन से रूल लाए थे गवर्नमेंट ने? पीपल लॉ जो अभी आया था, तो वहां पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था. क्या था रूल वो? एनी आइडिया? NRC. NRC and all. So I think Sabha, you wanna say also something? Sir, I was saying. So moreover, I am more concerned about it. Whatever the government decision, things will come, goes right, wrong, वो बाद में देखेंगे. Here the topic is, what is that agenda? What is that? So NRC is the one reason which has they are trying to implement over there, और बहुत सारे उसकी वजह से controversy वहाँ पे शुरू हुआ था. So very very sensible और Indian point of view से, strategic point of view से very important place. So if you will say this 7 state, what is called? क्या बोलते हैं इसको? North East के 7 state को क्या बोलते हैं? Give the name. Very good, very good. Who is there? I need to know the name. Shivanand, you have answered? Yes, sir. Come with video. Why your video is off? So very nice. My data is exhausted. Okay. Save your data, guys. We have exams. So that is like, you know, that is called like, you know, 7 sister. Or if you see the border of like, you know, they're like, you know, more like a China, the way they are in Galwan Ghati and all these places, the area from Bhutan, like, you know, and those borders areas are from others, those countries are nearby. The moreover the Buddhist influenced countries are there nearby, we have in those areas. So that is really matter a lot in the strategic point of India. It is very very important for us. Can we open an app on laptop? Yes, I would like to answer here in live only. One student has sent me a message. You guys can open your like, you know, app in laptop. Oh wow, but which app? That is more important. She asking me for NIFT exam app and some other app. I'll answer later then. So very very like, you know, important thing is, I'll tell you guys here. I have seen people having how much experience that matter, but patience is very important. Before speaking something, answering something, you make sure that you understand the things. If you see in last 2 weeks also, pan India, people have come up with ideas. कुछ लोगों ने कहा एग्जाम कैंसिल हो कराएंगे, कुछ ये करेंगे, आप ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए. And I keep saying to do not consume the over data, or you guys haven't done it smartly. You have done your preparation. You are much better than many students. I have added in few group. I see their students are crying. ये हो गया, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया. So make sure every moment utilize your time in a right direction, right way. What next? Keep in mind, take a step. Do not keep excuse for yourself. जो ऐसा हो रहा मैं क्या करूं, जो है सो है, उसको कैसे डील करना, right? So now the hour of time which is left, what we can do is we can read a question and we can relate the things and we can recall. यहाँ से मैं पॉजिटिव लेने के लिए ही मैं ये बात कर रहा था, एग्जांपल दिया था. तो रिकॉल और क्या याद आ रहा है उसके बारे में, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ के यू कैन नॉट मूव नेक्स्ट, है ना, उसको याद करो आप. और व्हाट एल्स? सो देन यू आर बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. तब आप मशीन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो. तो डेटा पढ़ा हुआ, आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, वो एग्जाम में करना है ना. अभी आपको नॉलेज को समझना, उस टॉपिक को समझना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है. नाउ महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग एंड कोल्हापुरी चप्पल. कोल्हापुरी चप्पल जो है
it is actually relate to again the place, right? Yes, sir. है ना? कौन सा place? Kolhapur. Kolhapur. कोल्हापुर महाराष्ट्र इज वेरी वेरी फेमस प्लेस, राइट? अब देखो आप ऐसे जब याद करोगे ना, आपको याद भी रहेगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। कोल्हापुरी कोल्हापुर, कोल्हापुरी कोल्हापुर, महाराष्ट्र। You guys know, I mean, I'm not good in names, so if these things I sometime ऐसे मैं relate ही करता हूँ हमेशा, जो मुझे ध्यान में रहे कहाँ से है। Then worldly painting. Now, if you haven't seen those paintings, कुछ ज्यादा एक और मैसेज आ गया सर, जी के PDF कैसे मिलेगा? हाँ सर, वो YouTube पे ब्लर दिख रहा है, मैंने चेक किया। हाँ, इसलिए लोग मांग रहे हैं PDF। वहां पे आंसर भी कर दो आप सुवर्णा बीच में, अगर कोई कुछ पूछे बोल दो, मिल जाएगा PDF, मिल जाएगा, नंबर दे दो। We'll pass on these PDF, my dear friends, whomsoever is watching, be a part of this family, subscribe the channel. But I will suggest even a student here and as well as in YouTube live, all of you, my request is, do not just read and complete reading the book, खत्म हो गया, टॉपिक खत्म कर लिया। पढ़ने के लिए बुक मत पढ़ो, आप एग्जाम देने के लिए मत करो। आपको एक दिन एग्जाम से पहले ऐसी बात कर रहे हो। दिस इज हाउ यू कैन डू गुड इन एग्जाम, है ना? बेस्ट तरीका एग्जाम में अच्छा करने का, जो आप इसके लिए एग्जाम ही नहीं दो, जो आपको नहीं एग्जाम में बहुत बढ़िया करना है। ट्राई योर बेस्ट, रिलैक्स, यू बी काम एंड कंपोज। आप पूरा ऐसे प्रेशर लेके जाओगे वहां पे, घर में बैठे बैठे वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यू विल क्रिएट दैट जोन because that's happening here inside, will disturb you. So while reading these questions also we have to do the same. Make sure be calm and composed, stay happy, and try to deliver best from here, best from the things. You will remember more. I mean, आप लोगों को याद है ना, top 1 to 10 आपने खत्म किया, and when I asked the question nobody remember even any state, कर्नाटका, बिहार, ये सब कुछ भी याद नहीं था। याद है अभी? है ना? अभी हुआ था ना, इसीलिए ये जरूरी है डिस्कशन, वही मैंने कहा था। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, सो हमने बात करा पंजाब, हमने पहले भी फुलकारी की बात करी थी। वी हैव सीन अ फुलकारी, है ना? वो आप लोगों को ध्यान होगा। देन ब्लू पोट्री, राजस्थान, नोन सारी चीजों को लेते हैं जो आप लोगों को ज्यादा याद है। आई डोंट वांट टू गो इन उस्ताद और लाइक यू नो जो कि आपको कंफ्यूज करे। अब जैसे उत्तर प्रदेश, हाँ बोलिए सर, उत्तर प्रदेश का भी फेमस है, वो बोल रही थी। हाँ, चिकनकारी बहुत फेमस है। आएंगे, मैं इस साइड देख रहा था, ये ज्यादा जो है राइट ये हो रहा है मेरे लिए। जैसे कारपेट वीविंग है सिक्किम, है ना? आई एम टेकिंग रैंडम सो दैट पीपल डोंट नीड टू नो। अब कारपेट वीविंग, यू सी अ कारपेट एंड रिकॉल करो कारपेट कहाँ से है। कारपेट में जो वीव होती है नॉर्मली समवेयर डेलिकेट कारपेट जो होता है उसमें टेपेस्ट्री वीव होते हैं, जो ऐसे ऐसे वाले वीव जो होते हैं, राइट? दोस कॉल्ड टेपेस्ट्री वीव। इन केस अगर आए कारपेट वीव्स और ये तो आप कर सकते हो, बट इट कैन बी अ डिफरेंट वन ऑल्सो। नाउ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो है टोडा एम्ब्रॉयडरी देखिए। सो टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर टोडा, ध्यान रखना है। तंजोर पेंटिंग, टी फॉर तंजोर, थोड़ा बहुत याद रहेगा ना। अगर इनकेस नाम याद नहीं रहा, सर ने कहा सर टी से तमिलनाडु, इनकेस एक ही टी आया तो आंसर कर दोगे आप। तो पेंटिंग आए, एम्ब्रॉयडरी आए, टी से क्लिक करना है। सो दिस वे ऑल्सो यू रिमेम्बर द थिंग समटाइम। ऐसे ना मैं सोचू अच्छा अर्नब इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सभा, तो सभा से मिलूंगा, अच्छा सभा का फ्रेंड अर्नब था। सो यू रिलेट द थिंग्स। ताजमहल के पास मिले थे उससे, हाँ। और जैसे अभी मेरा नाम कृष्णा है और वी हैव हरि कार्तिक, जस्ट नाउ आई हैव सीन हरि का वीडियो। सो कृष्णा एंड हरि, नो सिमिलर नेम ऐसे। तो this way things will be become more easier for you to understand, eliminate in GK round, because GK is something you have to answer very smartly. ऐसा नहीं है जो एकदम नहीं, मतलब कई लोगों को आता नहीं तो छोड़ो, एकदम टच नहीं करना तुम्हें। Try it in a right manner. Chances, अपने आप को कितना रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सर हैज ऑलरेडी डिस्कस एंड यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, बट योर रिस्क हैज टू बी कैलकुलेटिव। ठीक है, तो गोविंद सर ने बताया था आप लोग। ऑल राइट, नाउ अभी आते हैं जहां तक कि हमें कशीदा एम्ब्रॉयडरी एंड हैंडलूम वाला। सो कशीदा एम्ब्रॉयडरी इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर देखो आप किस चीजों में फेमस है। कश्मीरी शॉल, कितनी कशीदा की हुई उस पर काम होती है, डिटेलिंग होती है ना?
आई डोंट ईट नॉन वेज, बट वहाँ नॉन वेज बहुत प्यारा बनता है, मटन कीमा, मटन को भी एकदम कसीदा कर देते बनाते। आप चीजों को एक दूसरे से रिलेट करो ऐसे ना, मटन की बैंड बजा देते हैं। आई हैव सीन पीपल आर मेकिंग इट, रो में बैठ के वहां बनाते हैं एकदम ऐसे मटन कीमा जिसको कहते हो। सो व्हाट इज द ओवरऑल आइडिया इज, कॉन्सेप्ट इज, तो कैसे जो आप चीजों को पढ़ रहे हो अपने लिए इंटरेस्टिंग बना, जो आपको पढ़ते हुए खुशी मिले, एकदम मजा है, ऐसे ही हुआ है, और ऑटोमेटिकली वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास आ जाए। जैसे यस्टरडे वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट आर्ट हिस्ट्री, इफ यू रिमेंबर, है ना, अभी याद होगा ना, पॉप आर्ट अर्ली कहां शुरू हुआ था, अर्ली 50s में पॉप आर्ट। डिसअपॉइंट मत करना मुझे अभी। ब्रिटेन। गुड गुड राइट, है ना, क्यों याद है आपको? बिकॉज वी डिस्कस्ड, अच्छा नहीं, ब्रिटेन वाज द विनर इनिशियल, ब्रिटेन से ही यूएस बना है, सो समवॉट दैट्स व्हाट लेट 50 इट वेंट टू यूएस, ये लोग ही वर्ल्ड वॉर 2 के विनर थे। तो ऐसे हो गए जो आप उन चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, जो आपके फ्रेंड का ये था कॉल, सर चिकनकारी भी बहुत फेमस है और बनारसी साड़ी भी बहुत फेमस है, बट बनारस में चाइना का जो है वो यान तो होते हैं, यान के साथ जरी यूज किया जाता है, तो चाइनीज जरी बहुत यूज होने लगा था, यू नो, नाउ मस्ट बी इट हैज बीन इन अवॉइड, लाइक यू नो, पीपल आर अवॉइडिंग दीस डेज। बनता था बनारस में, आता था चाइना से, इतना फेमस हो गया। So influence of the modern time Banarsi sari, we could say, but yes, Banarsi saris are very famous. Everyone, mom might have these saris, right? ऐसे घर में, so you all know it is very very famous from Banaras. And then chicken curry from which place, which city? Lucknow. और क्या है लखनऊ में? Very good. Lucknow is the capital of UP. हाँ, एकदम कंफर्म है, यूपी का कैपिटल है, उत्तर प्रदेश कैपिटल। सर सिटी ऑफ नवाब। हाँ जी, सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर है ना, मुस्कुराते रहिए, आप लखनऊ में हैं। वेल नाउ अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड is one of the newly state. Uttarakhand was the part of which state earlier? Tell me. UP. यूपी सर, उत्तरांचल कहते थे सर। अजय सर उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था पहले। कहते उत्तरांचल में बोलते। कौन सा बॉर्डर लगता है उत्तरांचल से, उत्तराखंड से? हरिद्वार। हरिद्वार बॉर्डर लगता है, हरिद्वार है वहां पे। बॉर्डर कौन सा लगता है? बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, नेपाल। वेरी गुड, नेपाल इज द एनी अदर बॉर्डर और सिर्फ नेपाल ही है? चाइना। तो पाकिस्तान के लिए भी मे बी। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए भी है मे बी, अब श्योर नहीं हूँ। तो नेपाल का पता है। नेपाल कंफर्म है, वेरी गुड, चेक कर लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आता है। त्रिपुरा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? सर वही सेम जो मणिपुर और सब के लिए था, केन एंड बैम्बू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। सो हैंडलूम ये सब के लिए नोन है, जो है वहां पे भी। इवन मस्ट डिटेल में मुझे भी देखना होगा त्रिपुरा का, अभी याद नहीं आ रहा। चलिए अब नेक्स्ट आप जा सकते। Okay, so the next one is parent companies of Indian brands. The first one is Arvind Group, which consists तो of अभी जब इसको बोलोगे ना, आप भी जस्ट बोलोगे जो पेरेंट कंपनी द अरविंद फैशन ग्रुप, ऐसे ही है, तो उसको बताएंगे, फिर देखेंगे यूएस पोलो। यूएस पोलो जैसे 1000 करोड़ का ब्रांड है, फ्लाइंग मशीन, एरो, लाइक यू नो, उसको तो आप उसको इम्पेसिस करके बोलिए तो सबको याद रहेगा, राइट? एंड वन बाय वन बोलिए, मान लीजिए एक आपने बताया, दूसरा रो अर्णव बताएगा, तीसरा सवा बताएगी, लैंडमार्क ग्रुप का, राइट? दैट इज हाउ विल डू इट। ओके Okay, sir. Okay. So the first one is Arvind Group. The first one is US Polo. Then we have Flying Machine and Arrow, Sephora,
The Children Place, Calvin Klein, Haynes, Gant, Tommy Hilfiger, Ed Hardy, Izod, Aeropostale, True Blue, and Unlimited. Anyone ready to read the next one? Yeah. So under Aditya Birla Group, we have Van Heusen, Louis Philippe, Allen Solly, Peter England, Pantaloons, Planet Fashion, Forever 21, People, Cult, The Collective, American, Eagle, Simon Carter, and Ted Baker, then Reebok, House of Mashaba, then Sabyasachi, Ralph, and Lauren. Yeah, Who will read you the can next proceed one? to Landmark Group. I'll tell Landmark groups में you have Lifestyle, Max, Home Center, Center Point, Baby Shop, Splash, Shoe Mart, Homebox, Easy Buy, Sprar, Shoe Express, Viva, and Emax. Raymond, what's only 4 or 5? Raymond consists of Parks, Raymond, Ethnics, Park Avenue, and Color Plus. Okay, anyone ready to read this? Reliance Limited. I'll do it. Yeah, good. Reliance Limited has Burberry, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Diesel, Dune, Emporio Armani, Gas, Jimmy Choo, Marcos and Spencer, Scotch and Soda, Steve Madden, Tiffany and Co. Tumi, Vision Express, Mothercare, Michael Kors, Ritu Kumar, Manish Malhotra, Hamleys, Bailey, I'm not sure, Ajio, Reliance Trends, and Reliance Footwear. Okay, who will read Hindustan Unilever? Me. Sure. Yeah, can't. Hindustan Unilever, Dove, Lakme Products, Lux Soap, Sunsilk Shampoo, Vaseline, Tresemme, Pond's, Indulekha, Axe Deodorant, Liver Ayush. Okay, anyone for Tata Group? May I? Yeah, sure. Under the Tata Group, we have Taneira, Zara, Fast Track, Tanishq, Titan, Star Quick, Starbucks, Tata Click, Star Hair Market, Chroma, Vistara, Air Asia, Taj, Vivanta, Ginger, Cult Fit, Trend Limited, West Side, and Big Basket. Okay, anyone ready to read this much for Future Group? Okay. Under Future Group, there are Big Bazaar, FBB, Central, Nelgrace, All, Easy Day Club, Heritage Fresh, WH Smith, Brand Factory, 7-Eleven, Lee Cooper, Cover Story, Converse, Celio, Buffalo, Champion, Clarks, Ceres, T, Daniel Hedger, Famosi, D. Jancy, Atisa, Hey, Police, I Am In, Jealous 21, Knighthood, Mother Earth, Lombard, Mineral, Pink and Blue, Rig, Saj, Planet Sport, Scullers, Shatranj, Shaila, Spunk, Shrishti, Studio Nix, and Urban Yoga. Sir? Yes. So we are done. We are done. So you are done with what? Reading. Reading and yeah, the But good. PDF also. अब थोड़ा एक्टिव भी हो रहे हो आप लोग, पार्टिसिपेट भी कर रहे हो. गुड. अभी टॉपिक हो गया आपका सारा ये, या आगे भी कुछ है? सर नहीं सर, सब हो गया. Entrepreneur group. This is the last topic, right? Yes sir. हाँ, चलिए पहले पेज पे आते हैं. Let's come. We'll also on time. आज से मैं चाहता हूँ आप लोग रिलैक्स करो. अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं what is the groups are. I keep talking and you can see long list you have in Arvind group followed by Aditya Birla, है ना? Then we have Landmark group and Raymond's group, right? Just give me a second. I will join you.
Yes. So when we talk about the apparel brand of India, when you look at the example of the apparel brand of India, so these are the really very important group, especially like group of lifestyle brand landmark group. If you'll see, then the group of Aditya Birla Fashion, because they keep all the top brands. If you see Louis Philippe, Van Heusen, Peter England, or in fact Ellen Sol is also 800 900 crore brands. So all these brands are is where either 1,000 crore or more than that. If you'll see in Arvind Group, only the one of the brand is here. Tommy Hilfiger is also around on and off, it's doing good. But US Polo is 1,000 crore plus brand, is the one of the group which is there for US Polo. If you will see e-commerce brand like Myntra, so Myntra have a biggest brand is Roadster. Yeah, Yes, you guys sir. have heard about the Myntra also. Like we are talking about the retail segment group here, what we have all the brands and stores and all. So Myntra is more like an e-commerce, but they started a store also for a brand, and that brand called Roadster. You need to keep in mind, okay, that's particular brand called Roadster. So retail segment, e-commerce segment, export houses, these are the type of the fashion business, and it's good you guys have covered these brands. So keep your eyes on these topics, just revise once, twice. You need to know, okay, which brand relate to which company. Somehow if it comes, you can answer it. Just read it like, Next slide. Now if you go here, next slide. So Reliance Limited obviously is the next very, very important we have. Reliance Limited is nowadays into so many new things also apart from these topics. जैसे Reliance Trends भी इसका part है, right? Have you heard about Reliance Trends? Yes, sir. लिखा है. क्या मिलता है Reliance Trends में? Sir, clothing mainly. Clothing. Okay. And no doubt Hindustan Lever Limited in India काफी famous है, but Tata Group is become more bigger, vaster, and it having their own presence, right? Yes. Tata Groups, है ना? Recently Tata Group क्या acquire करा है? What is this the biggest? Airlines. Which airlines? Air India. Air India. The Air Air India. Yeah, very good. Yes, Very Sir, good. Air India. Tata की ही थी, but then it went to the government and government. Yes, sir. Good. So we all know Tata has come up with this, and that is the Air India Group. Very Sir, good. recently So अपने टाटा स्काई का भी नाम चेंज कर दिया. Now it's टाटा स्काई से टाटा प्ले हो गया है. टाटा प्ले हो गया. अच्छा, ब्रांड नाम क्या क्यों चेंज क्या हो कर दिया? गया? टाटा प्ले. टाटा स्काई से it became टाटा प्ले, and Big Basket became Blinkit. Yeah, वो तो Grofers. That's Grofers, right? Yeah. Yeah, it was Grofers, Grofers. not Blink. Yeah, Big Basket, right? Yeah, Grofers became Blinkit. एक और जानना बहुत जरूरी है. ये जो है कल्ट फिट का नाम सुना आप लोगों ने? Yes, sir. बहुत लोगों ने सुना होगा. बैंगलोर के स्टूडेंट, बैंगलोर वालों ने जरूरी सुना होगा कल्ट फिट. Yes, sir. सुपर फिट, ये फिट यहीं शुरू होता है ना सब स्टार्टअप. That is also acquired by the Tata Group. Yes, sir. Yes, sir. Heard of it. है ना? Have you heard about it? Yes. हाँ, sir. Tata Group ने acquire कर लिया उससे. बताओ. So it is very important to know acquisition was in train and the investment for last year during this Corona time. Reliance also had a lot of acquisition and a lot of investment. This group also. Keep these in mind. This will be helpful for you. All right, everybody. Yes. Yeah. Next slide. Future groups. I was talking about only जो कुछ तो जो है मिस हो रहा है. Big Bazaar जो group है. This is the one of the very, very important brand. Big Bazaar में क्या क्या मिलता है? Sir, सब मिलता है. कुछ मिलता है. Everything. सब कुछ मिल जाता है, नहीं? Tier 2, Tier 3 city student can relate a lot. Obviously, it's everywhere, Tier 1 city also, but yeah, positioning of this is way different. Merchandise of things are very different. The way they keep. हम उसे कहते हैं supply chain management. कहाँ पे किस स्टोर में क्या रखना है, किस सिटी में क्या रखना है, कैसा होगा, right? That is very important. Nitya, come with videos.
You may stop sharing it. You all also come with the video. We'll have a small discussion for next 10 minutes. And we will, like, in this session. Great, you all have participated, done. But what you can see here, did you notice? You all need to be more action oriented, more like, a person who is utilizing their own energy in a right positive manners. This is like in the right positive way, I can say. It's not a moreover. Why and what I'm trying to tell you is, if you will relate overall concept, I have also read the GK with you, but trust me, it's not because what we have done we can answer more than others, because the one portion we are finding it 5 other answer also over here. We are giving a value of recall. We are giving a value of power of your own memory, power of your subconscious mind. है ना, आप उस पे focus कर रहे हो. So believing more in yourself is very, very important. Yes, no, tell me. Yes, Naomi, Savarna? Yes, sir. हाँ, अनुजा, लगा थोड़ा मतलब इस तरीके से करके अच्छा लगा आप लोगों को? Yes, no? हाँ सर, मेरा तो चलता रहता है. Yes, sir. Liberating. Right. So it is very important, because this is how you work in a college during presentation. You might have a one image and then you have to explain. Anuja to करते रहती है explain अच्छे से. She explained every single things very nicely. And I see Ria also obediently she participates. She has joined very later. I think you started class in Jan, Ria, right? Or December in sometime. Yes, sir. कैसा रहा आपका जर्नी? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा. अच्छा लगा आपको, है ना? ये चीज को कंटिन्यू उसे फील करना. न्यूमी, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर? I think I'm better than GK now, a little more confident. More confidence. You are always honest. Right? Do you have any idea about Ira? Where is she? So I didn't hear you. Do you know? I mean, do you know about Ira? Where is she? I mean, how's her preparation? So I don't know who you're talking about. Oh, okay. She's from your school. That's what I asked. I will check Oh, with no. her. I've seen you, so I remember. Okay, maybe what is her preparation? All this. Hari Karthik, how are you? Nitya? Sir, I'm fine. Good, good. Hari? Yes, sir. So I really want people who are here in the class, and maybe all the extended YouTube family also, Sava, Dinesh, Arnab, you guys will stop bothering about the GK at least. That's what we are keeping kind of, last session as a GK for your exam prep. Isko nahi rakhna hai, and you have lot of notes in that GK group, right? Kai logon ne note banaya, you have your own notes also. And sort of, है ना? So let's go through those notes. You can download it, keep it on your this thing, and please try avoiding consuming data tomorrow. Tomorrow we might have one session in afternoon. We may not keep. We might keep more one-on-one, because everything is not suitable for all. Like somebody who started doing a preparation only a week before or 2 days before, उनको तो आज और कल बहुत पढ़ाई करनी चाहिए. I still suggest on this video, because sometimes some topic even I study last hour और तभी आप वही काम आता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. पहले भी नहीं पढ़ा, आज भी नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं होगा ऐसे. So I suggest those students who have started studying after your protest and all, so you must study so that you can do good in your exam. आप थोड़ी तैयारी कर लो. इतना सारा अब तक मैं पढ़ ली हूँ कि मुझे लग रहा है 2-3 दिन पहले से पढ़ाई छोड़ दी हूँ कि क्या अभी रिवीजन स्टार्ट करूँ और कहाँ पे एंड करूँ, तो इसलिए मैं 2-3 दिन पहले से छोड़ चुकी हूँ पढ़ना. हाँ, आप लोगों को नहीं करना है. जैसे अब अनुजा, न्योमी, सुवर्णा, आप लोग कुछ करना है तो बैठ गए, म्यूजिक सुन लिया, डूडल कर लिया. डू सम एक्टिविटी. डू नॉट कंज्यूम डेटा. Like your. I've seen some week went for me, like I got irritated with looking laptop, phone and all these things. I was like, let me keep away from this device. ऐसे एकदम चेक ही नहीं करना, देखना ही नहीं है. ये हाथों में ना कभी-कभी मार्क बन जाते, इधर इधर यहाँ पे pointed ऐसे. So that happens. So that is before exam. Make sure you do it. Avoid and do all the setup tomorrow only. Proper setup के लिए कल से कर लेना है.
You should not have any reason. Now also I see there are very few, but few of the students you are not able to open your video throughout the session. So if it's your hesitation or might be your आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर का नेटवर्क खराब है। Yeah, maybe. Hello, what happened? Sir is not there. Sir is joining. I am here. मैं लोगों की डेटा की बात बता रहा था तो मेरा डेटा खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ हो गया, बताओ। तो फिर मैंने अभी वाईफाई से कनेक्ट किया, आई रियलाइज इट वाज ऑन मोबाइल नेटवर्क। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, दूसरों को बताते हो आपके साथ ही हो जाता है। तो बी केयरफुल फॉर डे आफ्टर फॉर दीज बेसिक थिंग्स, फंडामेंटल, and try to do best. And I can happy to see most of you here in this live and all smiley faces, being happy. आज का क्या प्लान है, सच सच बताओ, आज क्या करने वाले हो आप लोग? सर मैं रिवीजन करूंगी रात तक, फिर उसके बाद बंद कर दूंगी। कर लो, जितना करना कर लो, आज कोई बात नहीं। मैं भी फाइनल रिवीजन करके आई एम गोइंग टू डांस, क्योंकि मुझसे काम आई फील काम। वीडियो भेज देना मुझे, है ना, ग्रुप में भी डाल देंगे, मैं पोस्ट कर दूंगा, भेज देना मुझे। आई टैग यू, इंस्टाग्राम पे टैग कर दूंगा मैं, डाल। बाकी बच्चे मोटिवेट होंगे तुम्हें देख। So the guys do some activity to think people are, it is somehow unfortunate, some students are having a problem, but somehow some kids was there with parents in hospital or somewhere there, unfortunately. So being online, they will also get opportunity to write the exam. So that is also there, like घर में कई लोगों के 2-2 3-3 लोगों को कोरोना है और these things है. So if you see overall, so obviously NIFT want more people to write the exam. That's what this exam is online. But this is a pandemic time. It's very unfortunate. Obviously, management or somebody is not doing it, but someone is not doing it purposely. So overall, things are going this bad. So think, आज से कल तक नहीं. This will give you more power. I'll tell you 1 or 2 story. What happened? My student was thinking, exam कैसा होगा? आपके दिमाग में क्या-क्या क्वेश्चन आएंगे? Let's take top 10 questions are. कैसे अच्छा मार्क्स आएगा? एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन कैसे रहेंगे? दूसरों का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोग ऑनलाइन में क्या कर लेंगे, ऐसे कई लोग बोल रहे थे जो कोई ऑनलाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे पता नहीं, बट कर लेंगे वो। एंड देयर इज 2 कैमरा एंड स्टिल दे विल प्लान। अब सोचो, तो ये सब चीजें जो दिमाग में आ रही है ना दूसरों को लेके, आप ये सोचो तो अब दूसरों के लिए अच्छा सोचो, सबका बढ़िया होगा, सब बढ़िया करेंगे, अच्छा पेपर आएगा, विश देम गुड लक, the things will come back to, it will be good for you. What we did, we make 10 smiley. मैंने सबको बोला 10 स्माइली बनाओ और एग्जाम सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट कराया। एक बार हम 10 लोगों को जाके गुड लक बोला, उन्होंने भी उसे बोला अच्छा अभी एग्जाम दे रहे हो, बेस्ट विशेस, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सी यू विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी। कुछ बच्चों को तो क्लासरूम में भी मिल गए एक आध आसपास में हाय हेलो बोलने के लिए। So this world is so small to hate people's, to create problem, to create like think something negative, and you have a very short time also, everybody, me too. So let's have a a beautiful exam, a very historical exam, very unique time. You are making a history, first time in NIFT batch. We are moving towards AR VR, we are moving towards meta world, that you guys know, right? आप में से कई लोगों को इंटरेस्ट होगा AR VR में, तो आप सोचो उसका पार्ट बन रहे हो, आप उस दुनिया का एक नया ये लिखने जा रहे हो। आप ऐसे लोगों को कहानियां सुनाओगे, अरे तो मेरे बैच से शुरू हुआ था, ऐसा हुआ था कुछ एग्जाम। तो जब आप चीजों को जैसे लेते हो, हाउ यू टेक थिंग्स, दैट्स हाउ इट कम बैक्स टू यू, दैट्स हाउ यू मेक्स। मान लो जिन्होंने 1947 में इंडिपेंडेंस देखा होगा, उनके लिए यस आई एम फ्रॉम दैट एरा, ऐसे देश कैसे किस दिन आजाद हुआ था। अभी हर एक साल होते हैं इंडिपेंडेंस डे, 75 ईयर,
but if you made some old people like maybe 80 plus 90 plus, तो उन लोगों को वो फीलिंग है उनके अंदर में, might be they were very young kids that time, but तो वही चीजें होती है. आप एक स्टोरी, एक स्टेटमेंट सेट कर सकते हो, एंड नो डाउट यू ऑल हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी. You all know they will going to judge your work based on, this is for all YouTube viewer also, they are going to judge your work based on your concept. Now they don't have time to judge based on your drawing का setting के लिए अब तो नंबर मिलने से रहा. ये तो श्योर है ना, प्रोडक्ट सेटिंग करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में. यू ऑल आर श्योर, राइट? क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा, कुछ डिजाइन करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, आइडिएशन करो. कलर भी अगर आपको भरना है किसी क्वेश्चन में तो दैट इज फॉर अ कॉन्सेप्ट. जैसे हम बात करते हैं ना, सेलिब्रेशन, हार्मनी, ये सब. मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो ऑन टॉपिक. आई नो यू हैव सो मेनी क्लासेस. मैम, सर, इनका उनका तो टॉपिक इज नॉट माय गोल राइट नाउ. सो यू ऑल विल एग्री विथ मी. सो आई नीड योर थॉट्स आर वन बाय वन. क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताओ क्विक, थोड़ा थोड़ा. जब बोलते हैं ना तो स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, ट्रस्ट भी बहुत अच्छा लगता है. सर, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सही आंसर कैसे गेस करें? ओके अर्णव, यू टेल मी. ऑल मस्ट यू टॉक, जो भी मन में आ रहा है. मेरे दिमाग में भी यही सेम थिंग था, लेकिन उसके ऊपर से मैं तो आपने बोला ना कि सबको ऑल द बेस्ट विश करो. आई वाज लाइक, मैं तो सबको ऑल द बेस्ट विश करूंगा, पर मुझे अच्छा करना है. मुझे बेस्ट करना है. तो आई वाज लाइक, सबके लिए क्या, सबके लिए बेस्ट विशेस आ रहा है, तुम अच्छा सोच रहे हो. मोमेंट यू स्माइल, खुश होते हो, दिमाग को मैसेज आता है आप खुश हो. सो दैट इज हाउ इट इज. अनुजा, आई फील कि मेरा एग्जाम सबसे अच्छा जाएगा. 1 to 10 रैंक के अंदर मैं रहूंगी. अरे वाह, एकदम ऐसा ही सोच रहा है. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज न्यूमी. I don't know. I mean, I'm fine. You have a lot to share. You are fine, I know, but there is a lot of things in your heart. I can see. No, I'm just scared. Like if I won't know the cat questions, that's it. No problem. You will know I'm the scared cat. for the maths part. Cat is going to come very simple, my dear friends. Very, very simple. That's my promise. चलो कल एक दो वीडियो मैं रिलीज कर दूँ. सर नवीन सर ने उल्टा बोला था. उन्होंने हम लोगों को बोला था कि इस बार का टफ होने वाला है. सर, क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं अभी मैं, अभी क्लास लाइव इस सेशन में बताऊं. हर एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला है. रैंक क्या आएगा वो पता नहीं मुझे, हर एक का रिजल्ट है. पोस्ट रिजल्ट यू टेल. ऑलराइट, अभी इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं करेगा यहाँ पे. नेक्स्ट स्टूडेंट रिया. सर बस मुझे इसी का डर लग रहा है कि मेरे घर का लाइट कट गया तो. ओह, इट इज इम्पोर्टेंट. बैकअप कुछ प्लान करा आपने रिया? क्योंकि है ना, ये बंगाल में बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. नहीं, आई नो दैट एरिया, द कंप्लीट एरिया उधर बारिश हो रही है. तो आप कुछ प्लान करा है आपने उसका बैकअप, बैटरी का, कुछ चार्ज का, ये सब का रखने का? यस सर. कीप दोस प्लान्स रेडी, है ना? गुड. सबा, सो कैट के लिए डर लग रहा है बस. सब एक दूसरे का क्वेश्चन रिपीट, ये सब नहीं सोच रहे हो आप लोग, कुछ और सोच रहे हो? नहीं सर, सच में सर आई एम सर, क्योंकि एक एक करके क्वेश्चंस भी अपलोड करने पड़ेंगे, उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा. सब हो जाएगा. कीप 15 मिनट एक्स्ट्रा, राइट? 15 मिनट फॉर योरसेल्फ. सम नोट, क्वेश्चंस भेजना आप लोग ग्रुप में, क्या क्या है विल डिस्कस. नित्या, व्हाट अबाउट यू? Sir, I'm actually afraid that when I'm writing GAT, I know the questions, but I don't remember the answers like on the spot. After the exam, oh, this is the question, I think. Hope it doesn't happen in NIFT, that's it. It will not happen in the NIFT. See, this question part, it's a good part, like, good things he has discussed right now. Here, I just want to elaborate. This is what the question of Numi, this is what the question of somehow, like, Shava was also asking. So CAT question, obviously you can see the all 3 question in a one go, or 4 question, whatever it comes. Out of this, you find which is the easiest one for you.
मैं एकदम डिकोड कर रहा हूँ आप सबके लिए, यू नो इट्स वेरी इजी टू नो. Easiest one which you feel है सबसे easy. I can see expressions also, thank God, many of yours. So the pick easiest question which you can relate with some your old work. Complete picture में वो काम आ जाए आपको दिमाग में, तो ये ऐसा दिखता था, ऐसा बनाया था, वो बनाना है मुझे. And I can do it in half an hour, 40 minutes maximum. Keep the one question, the timing is 30 to 40 minutes. और वो पहला question होना चाहिए, आप पहले से जानते हो. Now still you do it 2 to 3 minutes, some rough drawing for that question, and started creating your layout. कहाँ पे क्या draw करना, ठीक है? You are not supposed to give more time for detailing because drawing का question नहीं है, पूरा paper concept based आएगा. We have discussed a theory of representation, visualization, and observation. So question observation and visualization based आएगा. Representation is just part of your question, fundamental. जो 3 चीजें हमने पहले डिस्कस करी. Now coming back to the next 2 question, जो बाकी का क्वेश्चन है. While doing this question 15-20 minutes, है ना, आप while doing this question you are thinking about the next question which one you want to solve. उस क्वेश्चन को लेके परेशान नहीं होना जो आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है. अगला कौन सा क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो आराम से, आपके लिए इजी है, उसके लिए प्लानिंग करना. आप जब एक बार प्लान कर लिया, मान लो आप प्लान जो मुझे ये ड्रॉ करना है पेपर पे अभी, तो आफ्टर दिस आई हैव टू प्लान अगला क्या ड्रॉ करना है. फोन ड्रॉ करूं या ये की ड्रॉ करूं या क्या ड्रॉ करूं. सो आई विल ड्रॉ अकॉर्डिंगली, बट अभी फाइनल करना है क्योंकि आई हैव 2 ऑप्शन. तो इधर यू आर प्लानिंग समथिंग, इधर यू हैव ऑलरेडी इन माइंड, वो ड्रॉ करोगे. आउटलाइनिंग तक सिर्फ प्लानिंग करना है. वंस योर आउटलाइन एंड डन, तो आप इसके डिटेलिंग से पहले सेकंड वाले के लिए एक रफ ड्राइंग आप बना सकते हो, डिटेलिंग बाद में भी कर सकते हो, ठीक है. सो यू कैन मूव ऑन सेकंड ड्राइंग इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, ठीक है. सेकंड ड्राइंग से थर्ड ड्राइंग पे मूव करने का टाइम जो होगा, अपार्ट फ्रॉम डिटेलिंग पे बाद में आएंगे. आई विल स्टिल सजेस्ट थर्ड ड्राइंग पे आपको 1 आवर के बाद मूव कर जाना है, क्योंकि अगले आधे घंटे में उसके लिए भी आइडिया सोच लेना है. डिटेलिंग प्लीज कीप डिटेलिंग फॉर लेटर. Half of the student first question they give 1.5 hour, they lose their mental, physical, all the time, energy, time भी कंज्यूम होता है वहां पे, अपना भी. और इतना उसी क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत अच्छा कर लिया, निफ्ट डेली तो अब मिलेगा ही मुझे, इसको बनाना है अच्छे से, एकदम ये करना है. और बाकी 2 क्वेश्चन के लिए यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव एनर्जी, यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू मैनेज. दूसरा क्वेश्चन करते करते तीसरा क्वेश्चन बस ऐसे ही. जैसे यूआईडी का पेपर, आई थिंक 10 or 12 स्टूडेंट हैव सेंड मी. Every student have faced the problem in last question. Most of the student last के लिए टाइम ही नहीं बचा, या तो बनाया नहीं, स्किप कर दिया, या बनाया तो डिटेलिंग नहीं बनाया. मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेल. कलर वाला क्वेश्चन जो क्या डिफरेंट तरीके से बॉल बनाना था, राइट, दैट वाज द क्वेश्चन. वो कई लोगों ने एकदम एक्चुअल बॉल बनाया, ऐसा ऐसा टाइप का बॉल होता है ये. बट दैट क्वेश्चन इज यू आर इमोशनली गेटिंग कनेक्टेड बिकॉज देयर इज ए कलर. कलर वाले क्वेश्चन को ट्रैप के तरह देखना. अगर कलर वाला क्वेश्चन कुछ भी हो, प्रोडक्ट में कलर भरना हो, यस में हो, लुक एट द इमोशन, पिक योर कलर, फिल करो, खत्म. द ईयर आई हैव फिल्ड द रेनबो, आई गॉट अ डिसेंट मार्क्स, बट आई हैव नथिंग डन स्पेशल. रेनबो कलर का पिक था, लिया, भर दिया, कॉन्सेप्ट लिखा, खत्म. एंड हमारे टाइम में तो कैप्शन ही देना था, बस इतना ही करना. मुझे लगता है कि कलर ग्रेड वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा इस टाइम पे. नहीं, कलर ग्रिड का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं, ऑब्वियसली बात है. तो नॉर्मली दे डोंट रिपीट दैट क्वेश्चन. वो अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी फॉर्म में आए, इमोशन डिपिक्ट करने के लिए आए, अपनी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करने के लिए आए, कलर से कोई चीज को दिखाने के लिए आए, या ज्योमेट्रिकल बॉक्स को ये करने के लिए. मैं बड़ा सेफ बता रहा हूँ, सेफ एंड फॉर्म. जैसे भी आएगा मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो कलर का आएगा उससे आपको जो इमोशन दिखाना है वो ध्यान होना चाहिए, बॉक्स और ये आपका ध्यान नहीं होना चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. ओके, ठीक है. सो दिस इज हाउ वील प्लान. नाउ वी हैव डन मे बी इन 1.5 hour ऑल 3 लेआउट्स. और ऐसे ही आप डिटेलिंग के लिए मूव करो कि कीप योर डेडली टाइम 1 hour फॉर डिटेलिंग. तो बाकी 1 hour डिटेलिंग करेंगे, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चला गया कोई बात नहीं. Try started uploading your question from 2:45 and all. If within 3 hours you have to do it, because somebody have asked this question in YouTube live and here in chat also. तो क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा भाई? जो एक्स्ट्रा टाइम आपको शुरू में मिलेगा स्क्रीन पे, उसमें पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है,
If it's saying that within 3 hours you have to submit, that is for all. It is not unjustification for yourself. So don't feel yourself like, बेचारा, do it on time and submit. That's it. अर्नब, आपने हैंड उठाया हुआ था, बताइए क्या पूछना। और ये थोड़ा सा मुझे बस ऐसे ही पूछना था सर, एनआईडी से वैसे कंपेयर तो नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी पूछ रहा, एनआईडी में इस बार दे हैड सडनली उन्होंने धमाका दिया, हमें एक इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है व्हिच वाज सो आउट ऑफ द बॉक्स। निफ्ट भी ऐसा कर सकता है अगर उन्होंने एनआईडी में वो आया, ये कोई मैटर नहीं है, इट इज नॉट अ मैटर जो वो अलग से आ गया या धमाका हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, यस सर आ रही है। हाँ, there is nothing as such dhamaka if you ask me. It is Sir, quite it was normal, very quite normal. ये एनआईडी में जो आया प्रोडक्ट ड्राइंग का क्या था, इसमें क्या धमाका था बताओ? प्रोडक्ट लाइक वैसे क्वेश्चंस अक्सर आते नहीं हैं, लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो, लाइक मतलब क्योंकि मैंने साइकिल को देख लिया तो मैंने बना लिया, बट फिर भी आप अगर क्वेश्चन देखो प्रोडक्ट का या किसी भी आए, वो था तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी ना, और डेली लाइफ स्टाइल का ही प्रोडक्ट था। Shouldn't have any product which is out of the contest. मैं बोल रहा हूँ कोर वैल्यू को देखेंगे ना, फंडामेंटल जो हमने सीखा है। Why you are worrying about जो उसमें साइकिल आ गया और प्रोडक्ट आ गया और ये आ गया और कौन आ जाएगा? जो सुपरमैन आ जाए कोई बात नहीं है, बट करना क्या है आपको, उसमें कॉन्सेप्ट देखिए। तो आपको कोई अपने तरीके सुपरमैन डिजाइन करना, आप आज के टाइम में ऐसा कोई सुपरमैन डिजाइन करना चाहोगे जो कोरोना को खत्म कर दे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप आज के टाइम में सुपरमैन वो बनाना चाहोगे जो है, अच्छा ठीक है आप लोगों के लिए मे बी ये सोशल टॉपिक लाइक महंगाई और ये सब इज टू मच हो जाएगा, बट एज ए किड्स आल्सो यू वांट टू सी दैट द वर्ल्ड बिकम नेक्स्ट नॉर्मल। तो एक ऐसा कोई आपका जो होना चाहिए, वो आपको उसके लिए सुपरमैन बनाना हो या कोई सैंड बनाना हो या कोई बैनर ब्रांडिंग बनानी हो या पोस्टर बनाना हो, बट करना तो वही है। या सोशल अवेयरनेस टुवर्ड्स कोरोना, जैसे कि सीड के एग्जाम में भी आया था, जो अगर वो टेस्टिंग ट्यूब जो टेस्ट कर रहा है वो कैसा दिखेगा, तो वो अगेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एक सपोज वो क्या करते हैं, नोजल जो है वो नोज में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तो कैसा होगा ये फेस का ऐसा शेप और ऐसे ये जाता हुआ नोजल। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज, क्लियर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो बैकग्राउंड डजंट मैटर। समझ रहे हो? आप थोड़ा बहुत डिटेल करना चाहते हो तो रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, ऐसी चीजों को लेके परेशान नहीं होना। ऑलराइट, है ना? सो ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? गुप्ता जी आप कुछ बताइए। So write up. Write up. I am supposed to talk to you. Can we have a tomorrow afternoon sometime small discussion I'm having with many students? Naomi? Yes, sir. Yes, sir. You write up. We'll do it. Okay. So this will be more individual. I don't want to go write up in a group wide. Like suppose if I cannot write along, I prefer to write one caption or 2 or 3 points. If somebody who want to write in a write up as a format, उनके पास है keywords who can frame, they can go in a 4-line का proper neat clean write up also. But you remember you have to upload these. It has to be very very neat and clean. अच्छी write up है तो लिखना है, मेरी जैसे handwriting हो तो मत लिखना. You may write in a capital letter also, but वो दिखना चाहिए. Concept ये नहीं है जो write up में आपको फंसाना है. Concept ये आप क्या सोच रहे हो. You cannot give the jury. You know the jury presentation जो आप देते हैं, right? वो आप नहीं कर सकते तो आप वहां पे लिख रहे हो. तो क्या लिखे जो impactful हो, right? Very very impactful. जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, 1-2 ऐड का, कैप्शन का, ऐसे जिंगल का, है ना? जैसे बॉन्ड टफ होता है, कोई प्रोडक्ट को टफ दिखाना है तो टायर कंपनी का ऐड है. वी डिस्कस अ लॉट लाइक जैसे आप ब्रांडिंग देखो ना, KFC, कई बार मैंने ये भी एग्जांपल दिया. मूवमेंट इट कम्स, उनकी पूरी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्राफिक्स, लोगो, ये सब इट्स ऑल इंक्लाइन टुवर्ड्स चिकन, है ना? दे सेल ऑल प्रोडक्ट बट इट इज मैकडी बच्चों के लिए. सेगमेंटेशन कैसे किया उन्होंने? दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग द ब्रांड. How you are positioning your brand. So if somebody will goes in marketing and all, or might be you will take in NIFT later, NIFT में एक subject होती है आपकी floating और as well as IDM. उसमें अगर आपने marketing लिया तो वहां पढ़ोगे आप ये सब.
segmenting, targeting, positioning of the product. All right, clear for all of you? No doubt, है ना? Smile कर लो, कुछ ज्यादा ही बता दिया मैंने. अब कोई नहीं कुछ पूछेगा. Anybody want to ask something? Naomi, I'm summarizing it in detail for everyone right now. The individual is different. Yeah, that's what I'm saying. Yeah, you're looking. I mean, now you are also with full energy, smiling. Good, great. What about your friends and all? You have a group of friends. What all exam they are writing? Are they also writing design? Only a few of them are writing NIFT. Okay, and rest? The others, I'm not sure. I mean, they don't want to do design, so. Okay, okay. You are also in MCC right now or DPS only? DPS. DPS only, yeah. Okay. No, there are many students from DPS and all. They have joined MCC. That's what I'm asking. Like, you know, I get confused. I ask, are you in DPS? No, no, I'm not in MCC. 10th tak tha main. Good, good. Well, so done. We are done now. Okay, then. Bye bye. Stay happy. Stay blessed. If you guys feel so, to let's connect and have a small chat discussion. Anyway, we'll have class tomorrow, right? But that class will be dedicated for portfolio GDPI. We will not discuss at all related to NIFT exam in that class. You will not believe you will have exam also. Yes, if you want, let me know. We might keep a one more session for a small slot, like, you know, there, or more like individual group of your student who is needed. If you feel might be सोच के हो जाता ना, you get stress, you get like, you know, ये और आप share भी नहीं कर पाते, you are in home right now, so we should connect. तो आप लोग बताना मुझे, we might keep some session and there we'll connect and discuss. Okay, चलो then. Till the time, bye bye. Thank you so much everyone. Mukesh sir, you in this session now. Thank you so much, sir. All right, bye bye. Take care everyone. Bye, sir. Bye Bye, bye. sir. Take care. Bye, Good sir. night. Thank you, Bye-bye. sir. Yeah, welcome. Bye bye. Bye bye. Bye bye.